Hello dear children, welcome to the class. Today we are going to start a new chapter, that is rectification of errors. In this chapter, we are going to learn about what are the various types of errors that are being committed while preparing the books of accounts and how these errors are rectified. A trial balance is prepared to check the arithmetical accuracy of transactions recorded in a journal, posting them into ledger and balancing the ledger accounts. है ना, हम यही हमारा प्रोसीजर होता है. पहले हम जर्नल बनाते हैं या सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं. We post the entries into ledger, then balance the ledger accounts and take the balance of the ledger accounts in the trial balance. If a trial balance agrees, it is assumed that recording, posting and balancing have been carried out correctly. अगर ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है तो इसका मतलब मेरी जो अकाउंटिंग एंट्री है वो करेक्टली रिकॉर्ड हो गई है, करेक्टली पोस्ट हो गई है, बैलेंस हो गई है and the books of accounts are being prepared in a correct manner. However, if it does not agree, efforts are made to locate the error. अगर agree नहीं करता इसका मतलब हमने कहीं पे error commit किया है and the error can be committed at the time of recording, at the time of posting or at the time of balancing. Now, very important point. However, an agreed trial balance is not a conclusive proof of the accuracy of records. अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर किसी भी बिजनेस का ट्रायल बैलेंस मैच कर जाए तो इज इट अ कंक्लूसिव प्रूफ कि आपके जो रिकॉर्ड्स हैं वो एक्यूरेटली प्रिपेयर्ड हैं? सो योर आंसर विल बी नो. द आंसर इज नो. Even if the trial balance agrees, it's not a conclusive proof of accuracy of records. Even when a trial balance agrees, some errors may still remain in the accounting records. For example, a credit purchase in purchase book not recorded in the books of accounts will not affect the agreement of the trial balance because both debit and credit aspect of the purchase transactions are not at all recorded. See, if we forget to record any entry in our books of account, जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा है आपके सामने कि हमने क्रेडिट परचेज करी है और क्रेडिट परचेज को हमने परचेज बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया. अगर परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं किया तो ना ही मेरा परचेज अकाउंट डेबिट होगा और ना ही क्रेडिटर का अकाउंट क्रेडिट होगा. Fine. So, since the debit and credit aspect of the purchase transaction is not at all recorded, the trial balance will match, but there is an error in the books of accounts. Now we are going to start the classification of errors. There are different types of errors which can be committed in our books of accounts. The first type of error is error of omission. Error of omission can be error of complete omission or error of partial omission. Omission का मतलब कि आप एंट्री ही रिकॉर्ड करना भूल गए, आपने एंट्री ओमिट कर दी फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. इट कुड बी अ कंप्लीट ओमिशन, पूरी की पूरी एंट्री ओमिट कर दी. इट कुड बी अ पार्शियल ओमिशन कि one side, either a debit side is recorded or a credit side is recorded and the other side is being omitted of being recorded in the books of accounts. Second type of error is error of commission. Now, error of commission are of four types: error of recording, error of casting, error of carrying forward, and error of posting. We'll be discussing
each of these error in detail. Next is error of principle, and the last type of error is compensating errors. Let's discuss each of these errors one by one. First is error of omission. An error of omission is an error when a transaction is completely or partially omitted from being recorded in the books of accounts. अगर कोई transaction completely या partially omit हो गई है from being recorded in the books of accounts का मतलब books of accounts में record या तो completely नहीं हो पाई या partially हुई है, then it's a error of omission. Error of complete omission arises if a transaction is not recorded in the books of accounts. Such errors do not affect the trial balance because the complete entry has not been recorded or posted in the ledger account. Complete omission का मतलब हम totally भूल गए error को अपने totally भूल गए entry को अपने books of accounts में record करना. जब टोटली भूल गए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना, तो ना ही वो एंट्री रिकॉर्ड हुई होगी, ना ही पोस्ट और ना ही ट्रायल बैलेंस में गई होगी. नीदर द डेबिट एस्पेक्ट नॉर द क्रेडिट एस्पेक्ट. तो ट्रायल बैलेंस तो मैच कर जाएगा, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एरर है. Error of partial omission arises if a transaction is not completely recorded or if completely recorded has not been completely posted in ledger accounts. As a result, the trial balance does not agree as there would be either short debit or short credit. So error of partial omission का मतलब क्या हुआ कि कोई एंट्री आपने कंप्लीटली रिकॉर्ड नहीं की है, और अगर कंप्लीटली रिकॉर्ड कर दी है तो कंप्लीटली पोस्ट नहीं की है, या तो डेबिट साइड डेबिट एस्पेक्ट पोस्ट कर दिया है या क्रेडिट एस्पेक्ट पोस्ट कर दिया है, तो इन दैट केस ट्रायल बैलेंस विल नॉट अग्री. ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा, या तो हमारा डेबिट साइड ज्यादा आएगा या क्रेडिट साइड ज्यादा आएगा. Next type of error are errors of commission. Error of commission are those errors which arise due to wrong recording, wrong posting, wrong carry forward, wrong casting. Casting means your totaling of subsidiary books, or wrong balancing. Error of recording. The example is there in front of you. Goods of rupees 5,000 purchased on credit from Mohan are recorded in the purchases book as rupees 15,000. फाइन. तो ये रिकॉर्डिंग में एरर हुआ है. हमने मोहन से गुड्स परचेज किए थे 5,000 के, लेकिन we have recorded in the purchase day book as rupees 15,000. So this is error of recording, classified under error of commission. The second type of error is error of casting. Casting means totaling. Example could be the sales book is undercasted by rupees 500, यानी कि सेल्स बुक का टोटल करने में हमसे एरर हो गई और टोटल 500 लेस है. तो ऑब्वियसली जब टोटल 500 लेस होगा तो वो टोटल सेल्स अकाउंट में भी कम फॉरवर्ड होगा. फाइन. सो देयर विल बी अ एरर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. नेक्स्ट इज एरर ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड. For example, total of purchase book is carry forward as rupees 10,000 instead of rupees 1,000. बेटा हम परचेज बुक का बैलेंस एक पेज से दूसरे पेज पे कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे. परचेज बुक का जो टोटल था वो 1,000 था. While carry it forward to the next page, one more zero has been added to the figure and it has become 10,000. So an error has been committed, and this error is error of carry forward. And the last error is error of commission is error of posting. For example, posting the total of sales book
in the purchase account instead of sales account. सेल्स डे बुक का टोटल हमने परचेज अकाउंट में पोस्ट कर दिया. सेल्स डे बुक का टोटल सेल्स अकाउंट में जाना चाहिए था ऑन द क्रेडिट साइड, बट इंस्टेड ऑफ पोस्टिंग the total of sales day book in the sales account, we have posted it into the purchase account. So following are the errors of commission. I hope that the different types of error of commission is clear to everyone. The next type of error is error of principle. When a transaction is recorded in contravention of accounting principle, it is known as error of principle. Such error do not affect the trial balance as amounts are placed on the correct side but in wrong account. An example of such an error is treating the purchase of an asset or other amounts spent such as freight, etc. on its acquisition as revenue expenditure instead of capital expenditure. अब बेटा हम डेप्रिसिएशन जब हमने चैप्टर किया था, हम उस चैप्टर में भी ये कंसेप्ट वी हैव अप्लाइड दैट व्हेनेवर वी आर परचेजिंग एन एसेट, फॉर एग्जांपल अ मशीनरी, तो मशीनरी की जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो हम मशीनरी के कॉस्ट प्राइस में ऐड कर देते हैं. Fine. So we treat the installation expenses as the capital expenditure. Fine. And in error of principle, what error we have committed? Like we have treated that capital expenditure as revenue expenditure. यानी कि हमने उसको installation expenses revenue expenditure treat कर दिया. अब we know that expenses are to be debited, assets are also to be debited. तो इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस मशीनरी की कॉस्ट में ऐड हो या सेपरेटली हम उसको डेबिट करके दिखाएं, our trial balance will match, but the effect of this transaction is that an error is being committed. We have contravened the accounting principle, that is treating an capital expenditure as a revenue expenditure. ये capital expenditure को हमने revenue expenditure treat कर लिया. The trial balance will agree. The effect of such treatment is that financial results get distorted, but the trial balance will agree. The last type of error are compensating errors. Compensating errors are those errors, the effect of which is nullified by another error of equal amount. यानी कि दो error इस तरीके से हुए कि एक एरर के इफेक्ट को दूसरे एरर ने नल्लीफाई कर दिया. फॉर एग्जाम्पल, श्याम्स अकाउंट was debited with ₹1000 instead of ₹100. Thus, Shyam's account, which was debited by ₹900 less, was compensated by another error in Ram Prasad account, whose account was debited excess by ₹900. ठीक है, श्याम का अकाउंट डेबिट होना था with ₹1000. It was debited with ₹1000 instead of ₹100. यानी कि शाम का अकाउंट ₹100 से डेबिट होना था, लेकिन हमने गलती क्या कर दी, 1000 से डेबिट कर दिया. तो शाम्स अकाउंट which was debited by ₹900 less was compensated by another error in Ram's account, whose account is debited excess of ₹900. यानी कि दो एरर इस तरीके से हो गए और अमाउंट भी कोइंसाइडली इस तरीके से मैच करी कि the effect of one error is compensated by the another error. Another basis for classification of error is whether the trial balance will affect whether the error will affect the trial balance or not. Errors affecting the trial balance or one-sided errors are errors which affect only one account. बेटा जो error trial balance को affect करते हैं,
फाइन, जिससे ट्रायल बैलेंस अग्री नहीं होता उनको हम वन साइडेड एरर कहते हैं। वो एरर कौन कौन से हैं? पोस्टिंग ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ जर्नल एंट्री इन द लेजर। जर्नल एंट्री हमने पास करी थी, जर्नल में हमने लेट्स से डेबिट एस्पेक्ट पोस्ट कर दिया, क्रेडिट पोस्ट नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल सोल्ड गुड्स टू राम। नाउ suppose we are not maintaining subsidiary books, we are recording all the transactions in journal, so the entry will be debtor account debited to sales account। अब हमसे क्या एरर हो गया कि डेटर अकाउंट में तो पोस्ट कर दी एंट्री, लेकिन सेल्स अकाउंट में पोस्ट नहीं करी, सो द ट्रायल बैलेंस विल नॉट मैच। सेकंड टाइप ऑफ वन साइडेड एरर इज रॉन्ग टोटलिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स। हमने सब्सिडरी बुक्स का टोटल गलत कर दिया। पोस्टिंग करेक्ट अमाउंट इन वन अकाउंट एंड रॉन्ग इन द अदर। हमने जब पोस्टिंग करने लगे किसी जर्नल एंट्री की, एक अकाउंट में तो करेक्ट अमाउंट पोस्ट कर दी, लेकिन दूसरे अकाउंट में रॉन्ग अमाउंट पोस्ट कर दी, दो द साइड इज करेक्ट। रॉन्ग टोटलिंग और बैलेंसिंग ऑफ द लेजर अकाउंट। हमने लेजर अकाउंट की टोटलिंग या बैलेंसिंग गलत कर दी, तब भी आपका ट्रायल बैलेंस अग्री नहीं करेगा। एंड टोटलिंग द ट्रायल बैलेंस रॉन्गली, सब कुछ ठीक किया हुआ है, लेकिन जब ट्रायल बैलेंस को टोटल करने लगे तो टोटल मैच नहीं कर रहा, देयर कुड बी अ टोटलिंग एरर इन दी ट्रायल बैलेंस। वी आर गोइंग टू टेक all such type of transactions in this chapter and we will see that how are we going to rectify them। अभी बेटा आप ये समझ लीजिए कि ये ऐसे गलतियां बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करते समय हो जाती हैं, एंड जस्ट ट्राई टू एनालाइज द ट्रांजैक्शन। और ये एनालाइज करने की कोशिश कीजिए कि ट्रायल बैलेंस उसके अंदर इस ट्रांजैक्शन में अग्री करेगा या नहीं करेगा। Now let's understand the errors that do not affect the trial balance, or they are also known as two-sided errors. So two-sided errors are those errors which affect the two accounts. So the trial balance agrees even if there is an error. Two-sided errors occur in the following ways. First is error of principle, when the principle of accounting is not followed while preparing the books of accounts. Compensating errors, we just saw when one error is being compensated by the another error in such a way that your books of accounts or your trial balance will match. Then error of complete omission, आपने कोई एंट्री कंप्लीटली रिकॉर्ड करना भूल गए, फाइन, तो ना डेबिट एस्पेक्ट रिकॉर्ड हुआ ना क्रेडिट एस्पेक्ट रिकॉर्ड हुआ, तो ट्रायल बैलेंस अग्री हो जाएगा। सो इट्स अ टू साइडेड एरर। रिकॉर्डिंग रॉन्ग अमाउंट इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, अगर आपने रॉन्ग अमाउंट ओरिजिनली जब रिकॉर्ड करने लगे हैं तभी आपने रॉन्ग अमाउंट एंटर कर दी है, तो रॉन्ग अमाउंट ही डेबिट साइड में डेबिट एस्पेक्ट रिकॉर्ड होगा उसका, और रॉन्ग अमाउंट का ही क्रेडिट एस्पेक्ट रिकॉर्ड हो जाएगा। द ट्रायल बैलेंस विल अग्री बट देयर इज एन एरर। एंड लास्टली रिकॉर्डिंग बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन ट्वाइस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, एक ट्रांजैक्शन को हमने दो बार रिकॉर्ड कर दिया, अगेन देयर इज अ एरर बट द ट्रायल बैलेंस विल अग्री। Now detection of errors. Two columns of trial balance should be total again. It should be checked that cash and bank balances have also been written in the trial balance. Exact difference in the trial balance should be established. Ledger accounts should be balanced again. मतलब हम कहाँ क्या ऑब्जर्व कर ना, क्या कहाँ पे ऑब्जर्व करके एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट इज टू कॉलम ऑफ ट्रायल बैलेंस शुड बी टोटल अगेन, है ना। अगर मैंने देखा कि ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा, तो लेट्स से फर्स्ट कि कहीं टोटलिंग ट्रायल बैलेंस की टोटलिंग में तो एरर नहीं है,
So that is why trial balance should be total again. अगर यहाँ पर नहीं detect हुआ error, then it should be checked that cash and bank balances have also been written in the trial balance. तो फिर उसके बाद आप चेक कीजिए कि कैश और बैंक बैलेंस आपने ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड कर लिए हैं. Then exact difference in trial balance should be established. कितना difference आ रहा है trial balance में, that should be calculated. Then ledger accounts should be balanced again. फिर हम एक स्टेप पीछे आ जाते हैं, लेजर अकाउंट्स को बैलेंस करके देखते हैं. Casting of subsidiary books should be checked again, especially if the difference is rupee 1, 10, 100, 1000. So the totaling of subsidiary books should be checked again. If the difference is big, balance in various accounts should be compared with the corresponding accounts of the previous year. Fine, अगर difference बहुत ज़्यादा आता है तो हम क्या करते हैं? We are going to compare the balance of different accounts with the corresponding accounts in the previous year. पिछले साल के balance के साथ compare करके देख लेते हैं. Then posting of amounts equal to half the difference should be checked. It is possible that an amount has not been posted or has been posted to a wrong site. Then also the error can commit. If there is still a difference in trial balance, a complete checking will be necessary. लेकिन बेटा हम अपने books of accounts को बनाना halt नहीं कर सकते, रोकते नहीं हैं. In that case, if the trial balance is not agreeing, और हम ये सारे steps करके देख लिए हैं initially, तो हम क्या करते हैं, जो difference आ रहा होता है उसको एक अकाउंट खोलते हैं, that's a fictitious account, that is suspense account, और उस difference को, trial balance के difference को suspense account में डाल देते हैं. So the 9th point, if it is not possible to locate the errors, the difference in the trial balance is temporarily transferred to suspense account. Whenever any one-sided error is detected, it is subsequently corrected through the suspense account. It is subsequently corrected through suspense account. I hope, let me add this word over here, subsequently corrected through the suspense account. I hope that the different types of errors which we have discussed today is clear to everyone. We have also discussed that what are single-sided error or double-sided error, two-sided error. And lastly, we have discussed that how the errors are being detected. I hope all of you have enjoyed the learning today. Now in the next class, we'll be starting with the practical portion. We'll be learning that how these errors are detected, at what stage they are being detected, and how are they rectified by passing a rectifying entry in journal proper. That's all for today from my side. Thank you very much.